Hi, this is Khushbu with another question of polynomials. This is example number 11 from page number 6.19 of R.D. Sharma. It says, if ax cubed plus bx squared plus x minus 6 has x plus 2 as a factor and leaves a remainder 4 when divided by x minus 2, find the values of a and b. तो a और b के values लगाते हैं. So इसी polynomial का factor है x plus 2 और इसी polynomial को जब इससे divide करते हैं तो remainder बचता है 4. अब x plus 2 का इसका factor है. That means हम पहले let कर लेते हैं fx is equal to ax cube plus bx square plus x minus 6. x plus 2 अगर इसका factor है, that means x plus 2 0 है, तो x will be minus 2. So f के अंदर जब minus 2 डालेंगे, तो this should be 0 because x plus 2 इसका factor है. Factor means इसको पूरा divide कर रहा है. So यहाँ पर f of minus 2 put करने पर a into minus 2 का cube, b into minus 2 का square, minus 2 minus 6. So this will be a minus 2 का cube is minus 8 plus minus 2 का square is 4 plus minus 2 plus minus 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 2 minus 6. This should be equal to 0 because हमने कहा है f of move to minus 2 डालने पर is 0. So this is minus 8a plus 4b minus 8 equals 0. So minus 8a plus 4b is equal to 8. ये आपके पास आ गई equation 1. So this is x minus 2 is equal to 0. So x is equal to 2. अब f of 2 जब डालेंगे, f of 2 put करने पर remainder is 4. So इस पे 2 put किया. So this is a 2 का cube plus b 2 का square plus 2 minus 6 is equal to 4. So this is a into 8 plus b into 4. This is minus 4 equals 4. This is 8a plus 4b, 4 plus 4. वहाँ जाके add हो गया. So 8a plus 4b is equal to 8. This is second equation. So एक है ये और एक है ये. दोनों equations को solve करें. So first equation थी ये and this is second. Is equal to 8. ये cancel हो गया. 4b plus 4b is 8b. 8 plus 8 is 16. So यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी. So b is 16 by 8. That means 2. So b is 2. If b is 2, किसी भी इक्वेशन को यूज करके we can find the value for a. So यहाँ से a will be 8a plus 4 into 2 equals 8. So 8a plus 8 is equal to 8. So 8a is equal to 8 minus 8. 8a equals 0. So a will be 0 by 8 means 0. So आपके पास a की वैल्यू आ गई 0. This was 11th example from R.D. Sharma and do watch the next video for some more questions. Bye bye.